द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिया पे जाउछु। फर्स्ट क्वेश्चन होची why were the nationalistic feelings running high during the 1936 summer olympics in berlin। तो nationalistic feeling कौन गोटे पर्सन रो निज देश प्रति डिवोशन को एठी nationalistic feeling कहा जाइछि। आरो आंसर कौन हबो ना the nationalistic feelings were running high during 1936 summer olympics in berlin because Hitler childishly insisted that German performers were the members of a master race। तो हिटलर छोटो छुआ भाया कौन इनसिस्ट करथिले ना द मेंबर्स ऑफ द जर्मन प्लेयर्स द जो जर्मन रे मेंबर्स गुरा को पार्टिसिपेट करछन्ती ओलंपिक्स रे से माने उच्च वर्गर लोक दैन अदर मेंबर्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स। तापर नेक्स्ट कौन इन आई वाजंट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। तो दिस रेफर्स टू हिटलर्स बिलीव और विनिंग अ गोल्ड मेडल। यही सेंटेंस रे दिस रेफर करा जाइछि हिटलर बिलीफ को। ओके हिटलर बिलीव्स होछि दिस रो आंसर माने ए क्वेश्चन रो आंसर। व्हाई वाजंट ओवेन्स वरीड। तो ओवेन्स काहे की वरीड नथिले। ओवेन्स वाज नॉट वरीड because he had trained, sweated, disciplined himself for 6 years with the Olympics game in mind। तो कहीं ओवेन्स वरीड नथिले ओवेन्स एइथिपाई वरीड नथिले कहीं ना सीए निजको निज ऊपर बहुत काम करथिले सीए निजको ट्रेन करथिले डिसिप्लिन करथिले सेही सेम ओलंपिक गेम्स पाई फॉर ओवर 6 इयर्स। तो 6 इयर्स से निजको ट्रेन करथिले झाड़ बुहाई की डिसिप्लिन शिखिथिले सीए निज माइंड रे ओलंपिक्स गेम को नहीं कि ही प्रैक्टिस करू। क्वेश्चन कौन व्हाई डिड एवरीवन एक्सपेक्टेड ओवेन्स टू विन द लॉन्ग जंप इजीली। तो समस्ते कहीं भाबुथिले कि ओवेन्स इजीली लॉन्ग जंप टाको जीति जेबे एथरक बेली। एवरीवन एक्सपेक्टेड ओवेन्स टू विन द लॉन्ग जंप इजीली बिकॉज अ ईयर बिफोर ओवेन्स एज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैड एस्टैब्लिश द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 8 1/4 inches और 8.813 meters। तो कौन होता ना एज ओवेन्स पूर्व वर्षर गोटे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हिसाब रे गोटे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करथिले केतेर 26 feet 8 1/4 inches रो। तो सेइथिपई समस्ते लोक तांको ही भाबुथिले सीए ही विनर हेबे एथरक ओलंपिक्स गेम रे। What was the surprise that awaited जेसी ओवेन्स in Berlin। तो से सरप्राइज टा कौन जोटा जेसी ओवेन को पई वेट करथिला बर्लिन रे। The surprise that awaited Jesse Owens was a tall German boy Lars Long amazing performance of hitting the pit at almost 26 feet on his practice jumps। तो आमने कौन तांको पाखरे कौन सी सरप्राइज टा वेट करूथिला बर्लिन रे ना गोटे जर्मन ओलंपिक प्लेयर जी निज प्रैक्टिस राउंड रे ही 26 फीट जंप मारुथिले। तो तांको ना कौन थिला से जर्मन प्लेयर ना तांको ना थिला लर्स लॉन्ग। व्हाट डिड ही लर्न फ्रॉम द पीपल अबाउट लर्स लॉन्ग। तो लोक मानक ठारू से लर्स लॉन्ग को विषय रे कौन सुनिया पई पाइथिले जेसी ओवेन्स। He learned from the people about Lars Long that Hitler had kept him secretly, hoping him to be the winner in the jump। तो ओवेन्स कौन सुनी थिले लोक मानक ठारू ना लर्स लॉन्ग को हिटलर घोड़े की रखी अंडर रैप्स माने घोड़े की रखी सिक्रेटली या भाबिकी तांकू ट्रेन करा जाउथला कि सी जेंती लॉन्ग जंप्स रे विन करंतु। Do you think Nazis' Aryan superiority theory means the Germans were superior to Negro? How do Owens feel about it? Angry or bothered? तो कौन आर आंसर कौन I don't think Nazis' Aryan superiority theory means Germans were superior to Negroes। आ माने या नथिला and against Owens was angry about it। Owens को राग चिड़ुथिला ए थियोरी ऊपर। What made Owens determined to beat Lars Long। तो तांको कौन एमिति थिला ओवेन्स को भीतर कौन एमिति आसला जे तांको लागिला कि मते बीट करिया पे ही पड़िबो लर्स लॉन्ग को मते तांको हरिया पे ही पड़िबो। तो दीटा फैक्ट थिला। फर्स्ट ओवेन्स को लर्स लॉन्ग को बीट करिया पे कि थिला काहे कि ना सी गोटे नेग्रो थिले आ तांको प्रूफ करियार थिला कि जर्मन पीपल्स आर नॉट सुपीरियर आ तांको
आउ गोटे कथा है हिटलर आर्यन सुपेरियरिटी थियोरी को रॉन्ग प्रूफ करिवार थिला तो सेथिपाई द फैक्ट दैट मेड ओवेन्स determined to beat Luzlong was that he was a negro. Against this backdrop he would disapprove Hitler's Aryan superiority theory. Let's discuss Unit 2 questions. Unit 2 ର first question कौन? What does a coach say about an angry athlete? Angry athlete विषय coach कौन कहिचंती? A coach says that an athlete will commit mistake. In other words, he says that anger is the worst enemy of an athlete. तो coach एठी कौन कहिचंती? कोच कहिचंती कि गोटे एंग्री एथलीट सबुबले मिस्टेक करे आउ एंगर होची सबुठु भयंकर शत्रु गोटे एथलीट रो तो what were the results of the first two qualifying jumps for Owens? First दीटा qualifying jump रे Owens करो कौन result पाइले सी ना Owens performed poorly on his first two qualifying rounds. On the first jump he leaped from several inches beyond the takeoff board माने takeoff board रो बहुत दूर रे से थिले आउ सी फाउल करथिले. On the second jump he fouled even worse. आ second jump रे से आउ थरे बहुत खराब भाबरे फाउल करले. क्वेश्चन होची why did Owens kick the pit? तो से काई ग्राउंड को किक करथले. Owens kicked the pit because he failed during his trials. He was disgusted. तो सी तांको बहुत खराब लगी से रागी की से ग्राउंड को बहुत डिस्गस्टिंगली किक करथिले. हु ऑफर्ड ओवेन्स अ फर्म हैंडशेक? वाज ही फ्रेंडली और हॉस्टाइल? तो आ माने कौन ना ओवेन्स को किए गोटे फर्म माने टाइट हैंडशेक ऑफर करथिले आउ तांका हैंडशेकटा फ्रेंडली थिला ना अनफ्रेंडली था? हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली. तो आंसर होची Luzlong, a German long jumper, offered him a firm handshake. He was friendly. Long speak to Owens during the trials. Did it mean to make friendship with Owens or to find out what was troubling him? तो Luzlong काहेकि Owens को सेट फ्रेंडशिप करथिले? कौन सी सतरे फ्रेंडशिप करिया पे चाहुथिले ना जानिया पे चाहुथिले तांको कौन एक्चुअली ट्रबल करची? लॉन्ग स्पोक टू ओवेन्स ड्यूरिंग द ट्रायल्स टू हेल्प हिम. तो लॉन्ग कौन करथिले? ओवेन्स को सहित कथा हेतिले ट्रायल्स बेले तांको सहाय्य करिया पे. ही वांटेड टू फाइंड व्हाट वाज ट्रबलिंग ओवेन्स. ही एक्चुअली जानिया पे चाहुथिले ओवेन्स को कौन हैरान द पार्ट. व्हाट डज दिस मीन? डज इट मीन लॉन्ग वाज ट्राइंग टू प्ले द पार्ट ऑफ एन आर्यन और ही लुक्ड if he belongs to a superior race? तो एक्चुअली केसटा कौन थिला? सी कौन निज को मास्टर रेस रो भाबुथिले ना भाबु नथिले? तो he was really looked the part. आ माने कौन? आ माने होची Luzlong was trying to play the part of an Aryan. तापरे how did Luzlong help Jesse Owens in qualifying the final jump? तो Luzlong केमिति Jesse Owens को हेल्प करथिले फाइनल राउंड को जीवा पाई कि? Luzlong helped Jesse Owens in qualifying the final jump by advising him to draw a few lines. Luzlong helped Jesse Owens in qualifying the final round. तो Luzlong केमिति Jesse Owens को हेल्प करथिले फाइनल राउंड फाइनल जम्प्स को जीवा पाई क्वालिफाई होबा पाई? Luzlong helped Jesse Owens in qualifying for the final jumps by advising him to draw a line a few inches to the back of the takeoff board and focusing on his start from there. तो से कौन करथिले? टेकऑफ बोर्ड रो फ्यू इंचेस पछकू टार्गेट रखिकी सेठू फोकस करिकी जंप करिया पई तांको कहिथिले. काहाकू? जेसी ओवेन्स को Luzlong कहिथिले. सो tomorrow is what counts. What did Long mean by this? Does this mean that Owens would win the next day or their performance the next day would matter much? तो Luzlong काहाकू माने ए वर्ड टुमोरो इज व्हाट काउंट्स कहि कि कौन बुझिया पे चाहुथिले? कौन से कहिया पे चाहुथिले कि जेसी ओवेन्स जी से नेक्स्ट डे को जितिबे ना नेक्स्ट डे रो परफॉर्मेंस होची से जिंस जोटा बहुत मीन करूची जोटा बहुत मायने रखुची. तो Luzlong या कहिया पे चाहुथिले कि ओवेन्स वुड विन द नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे रे किए जितिबो सेटा ही गणा जीवो ना कि ट्रायल राउंड से एटा कहिया पे चाहुथिले. Did Owens qualify for the final jump? How did he do that? Thanks to Long's friendly advice, Owens qualified for the final jump. Brimming with confidence, he drew a line a foot
full foot behind the board and advanced to jump from there and qualified for the final jump. तो से कौन कहले few lines से पछरू बोर्ड पछरू टार्गेट करके सेठू डेया पे चेष्टा करथिले एज पर लजलंग एडवाइस. तापर जेसी ओवेन्स कौन करथिले फाइनल राउंड पे कि सिलेक्ट हो जाइथिले लॉन्ग जंप रो. तो विच वाज ऑल बिकॉज ऑफ द फ्रेंडली एडवाइस ऑफ लजलंग. रो क्वेश्चंस कौन थला when did Owens and Luzlong realize that they had become friends. तो Luzlong और Owens केबे फील कले जैसे सांग ही सरचंदी. Owens and Luzlong realized that they had become friends after the former went to the latter's room. Former किए एटी former होचंती Owens और latter किए Luzlong. तो जेतबेले Owens Luzlong को रूम को जाइथिले आउ तांको सहित बसिकी 2 घंटा कंटिन्यूअसली कथा हेइथिले का विषय ना फील्ड विषय ट्रैक्स विषय निज विषय ग्लोबल सिनारियोज विषय आउ अ डजन ऑफ अदर टॉपिक्स उपरे से सेतबेले जानिया पई पाइथिले कि से माने बहुत बढ़िया सांग हेइ सरछंती. तो आंसर कौन हबो ओवेन्स एंड लॉन्ग रियलाइज दैट दे हैड बिकम फ्रेंड्स आफ्टर द फॉर्मर वेंट टू द लैटर्स रूम एंड टॉक्ड for 2 hours concerning tracks and fields themselves, the global scenarios and dozens of other topics. Who was Covertine? What was his idea? तो Covertine किए थिले Covertine होचंती founder of modern Olympics game. तो his idea was that in life not winning but fighting in a right spirit was important. जीवन रे जितिबा important नुहे but तमें ठीक भाव में लड़ीच कि ना सब सिचुएशन सहित सेटा इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक्स गेम कौन ना इन द ओलंपिक गेम्स it is the important thing is not winning but taking part. Has Luzlong been called a fine example of Covertine ideas? So Luzlong had been called the fine example of Covertine ideas because the former माने कि Luzlong took a leaf out of latter's book माने Covertine's book. The important thing in the Olympic game is not winning. से proof कले जे important जिनस ओलंपिक गेम रे जितिबा नुहे हेले भाग नबा हेई थाए. द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कन्क्वेरिंग बट फाइटिंग वेल. केते तमे हासिल करि सारछ सेटा इंपोर्टेंट नुहे हेले सबु हासिल पछरे तमे केते लड़ीच ईच एंड एवरीथिंग को करिबा पछरे तमे केते एफर्ट्स देइछ सेटा होची इंपोर्टेंट लाइफ रे. सेटा ही सबु मनुष्यों को बेटर बनाए. व्हाट डू यू थिंक वाज द ग्रेट ओलंपिक prize for Jesse Owens? The gold medal he won in the long jump or the friendship he formed with the Luzlong? तो तमको कौन लगुची ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जेसी ओवेन्स को पाई कौन थिला सी जो गोल्ड मेडलटा जीति थिले ना सी लजलंग को सहित जो फ्रेंडशिप करथिले. I think the greatest Olympic prize for Jesse Owens was the friendship he formed with Luzlong. तो फ्रेंडशिप से जो लजलंग को सहित करथिले सेटा ही होथिला तांकर ग्रेटेस्ट ओलंपिक एक्टिविटीज कौन ना चाइल्डिश चाइल्ड होची गोटे एडजेक्टिव. चाइल्डिश सहित आमे जते बेले ly ऐड करू से हे जिवो एडवर्ब. चाइल्डिशली कंप्लीटली गोटे एडवर्ब हे जिवो. सेंती इजी रो इजीली हबो बिटर बिटरली क्लियर क्लियरली फ्रेंड फ्रेंडली सर्टेन सर्टेनली रियल रियली डिस्गस्ट डिस्गस्टिंगली फिजिकल फिजिकली फाइनल फाइनली sudden suddenly. Replace the italicized word in each of the following sentences with idiomatic expressions given in the bracket. तो bracket रे कौन दिया है on all the time high, hands down, under wraps, hot under the collar. The plan was carefully kept secret. Kept secret रो idiom कौन हबो under wraps. Tendulkar's double century is the highest ever individual score in one day cricket match. तो ये इटालिसाइज्ड वर्ड कौन हाईएस्ट एवर को इटालिसाइज्ड करा हेची. तो आर इडियम कौन हबो इज एन ऑल टाइम हाई. तापरे क्वेश्चन होची यू वुड नेवर गेस दैट ही वाज अ सिक्योरिटी गार्ड ही डोंट अपीयर टू बी सूटेड टू द जॉब. तो कौन इटालिसाइज्ड वर्ड होची अपीयर टू बी सूटेड. तो अपीयर टू बी सूटेड का को चेंज हबो ना लुक द पार्ट को चेंज हे जबो इडियम. तापरे दिल्ली डेयरडेविल्स वन द आईपीएल कप वेरी इजीली. तो वेरी इजीली कौन हैंड्स डाउन हे जबो इडियम चेंज हेले.
The policeman was very angry because the criminal escaped. Very angry italicized ହେଇଛି ସେଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ hot under the collar. ଏଇଠି କିଛିଟା ମେକ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି, ୟୁ ମେ ନୋଟ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଅର୍ ଟେକ୍ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଅଲ୍. ଆଉ କିଛି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି MCQsର. MCQ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ.